Hello and welcome to the live session on pancreatitis. I'm your host, Dr. Fauzia, and we shall be talking about various aspects of pancreatitis. This session seeks to provide an accessible platform for medical professionals to discuss their areas of expertise and create an engaging dialogue about the latest in healthcare. We know how important it is for all of us to stay up to date on what's happening in the world of health, and this live session seeks to make it easier for everyone to do so. I'm delighted to have with me today Dr. Shandil. He's a senior consultant gastroenterology and hepatology. A very warm welcome to you, Dr. Rajeev Shandil. Thank you for joining us for this live session. Thank you. Welcome Sir. everyone. Yeah, welcome, sir. So, Dr. Shandil, let's dive right in. So, as you know, we are discussing about pancreatitis. So, what is acute pancreatitis, and are certain age groups susceptible to it? So pancreatitis is first we should know what is the pancreas. The pancreas is an organ which actually secretes a pancreatic juice, and also it secretes insulin, which is responsible for glucose metabolism, and lack of insulin causes diabetes. And it is just the pancreas duct or its secretion open just beyond the stomach in the intestine, and it lies just behind our stomach, just in front of our spine. So whenever there is inflammation in the pancreas, it causes severe pain and sometimes vomitings also, and sometimes some organ failures. And there is no age which is exempt from acute pancreatitis. It can happen at any age. Okay, so as just say young people are also susceptible, the same is for elderly or middle जो aged. कॉजेज होते हैं अलग-अलग एज ग्रुप में वो अलग हो सकते हैं, बट क्योंकि कुछ जेनेटिक कॉजेज भी होते हैं पैंक्रेatitis के, तो छोटे बच्चों को भी पैंक्रेatitis हो सकता है और बड़े बूढ़ों को भी पैंक्रेatitis हो सकता है. Causes can be different, but pancreatitis is a disease, acute pancreatitis especially, which can happen at any age. ओके एंड कौन से सिम्टम्स होते हैं अगर किसी को लगे कि उससे पैंक्रियास की कोई बीमारी हो, तो कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं जिससे आदमी को शक हो जाए? Symptoms can be varied in severity. कई बार कम होते हैं, कई बार ज्यादा होते हैं, डिपेंडिंग कि कितना सीवियर पैंक्रेटिस का अटैक है. तो खासकर आपके पेट के ऊपरी भाग में अगर दर्द होती है और सडन सीवियर पेन विच इज क्वाइट सीवियर, और अगर वो बैक की तरफ रेडिएट करती है, सीधी जा रही है, मतलब पीछे की तरफ कुरेदती हुई जा रही है दर्द, साथ में उल्टी होती है और भी किसी तरह के आपको अनमना महसूस होता है, तो ये लक्षण हैं जो कि पैंक्रेटिस के हैं. क्योंकि और किसी भी बीमारी में पेट में अगर गैस्ट्राइटिस होता है या और कुछ पेट खराब होता है, उनके साथ ही ओवरलैप तो हो सकता है, पर अगर पेट के ऊपरी हिस्से में एकदम बहुत ज्यादा पेन होना और साथ में उल्टियों का आना और कई बार ब्लड प्रेशर का डाउन होना, ये और बीमारियों में हो सकता है, पर पैंक्रेटिस उसमें एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बीमारी है जिसके की consequences can be sometimes very disastrous also. So we have to keep this thing in mind always when we are seeing this kind of a patient, या पेशेंट को अगर खुद महसूस होता है तो he should try to seek help from a medical professional. जैसे डॉक्टर शंडिल, आपने इससे पहले कहा था कि कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं. So, what are the genetic factors? I mean, does a person have this predisposition to have pancreatitis? Yes, so there is an entity known as hereditary pancreatitis. So there are about 3 to 4 genes which have been identified. अगर वो उस तरह के genes किसी individual में होते हैं, so उनको recurrent attacks होते हैं pancreatitis के. Usually वो जो attacks होते हैं बहुत severe नहीं होते, पर कई attacks होते हैं, और वो पेशेंट्स फिर आस्ते आस्ते कई अटैक्स के बाद उनको क्रॉनिक पैंक्रेटिस में तब्दील हो जाता है, मतलब जो पैंक्रियास है वो परमानेंटली कुछ डैमेज उसमें हो जाता है. सो दीज अटैक्स यूजुअली डोंट स्टार्ट आफ्टर मे बी अर्ली सेकेंड डेकेड. मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे हैड अटैक्स ऑफ पैंक्रेटिस बाय द एज ऑफ 15-16. ऐसा बहुत मुश्किल है, या मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि पहला अटैक ही जेनेटिक या हेरिडिटरी पैंक्रेटिस में 25 साल के बाद. And what is the common complication which occurs once a person has pancreatitis? Before that, I think we can talk about what are the common causes of pancreatitis.
Yeah, If we you can if you talk discuss about about what the are common causes of pancreatitis in adult population, they are two. In two-thirds of the patient, maybe 70% of the patients, you will have two causes. One is stones in the gallbladder, which sometimes slip out of the gallbladder, go into the bile duct. They sit on the mouth of the pancreatic duct and cause inflammation in the pancreatic duct, which causes pancreatitis. And the second thing is alcohol, especially binge alcoholic intake. If you're taking continuous alcohol, you can have attacks of pancreatitis, milder attacks. But sometimes people who are not even very regular drinkers, they go on holidays or on weekends, they take binge drinking, go for binge drinking, and that can cause pancreatitis. And those attacks, mind you, can be very, very severe, even life-threatening attacks. And out of all comers of pancreatitis, I would say about 85% of pancreatic patients will have very mild symptoms or mild attack. They will have severe attack, like pain would be severe, but 85% of the people will require hospitalization for 2 to 5 days probably, and they'll get better. 15% are the ones who will have severe pancreatitis, who may require ICU care, and we may lose 5% of all people of pancreatitis despite all our efforts. So people who have severe pancreatitis, the mortality rate is about 30%. 30% people will not survive despite best of our efforts. so what are the risk factors in an individual or a population which will result in pancreatitis? Are there any So risk as we factors talked about associated with these important causes, there are about 10, 12 causes for pancreatitis, most common being gallstones. So somebody who has got gallstones, most of the time people say that people would have had pain of gallstones before they present with an attack of pancreatitis. But we have seen that sometimes the first presentation is pancreatitis only. They have never known that they had stones, and the stones slip out and they cause pancreatitis. Second is alcohol. Then you have hereditary pancreatitis we talked about. Then you have sometimes viral infections can also cause pancreatitis as part of viral illness. As it involves the whole of the body, it can cause pancreatic inflammation also. You can have traumatic pancreatitis. Some trauma to the abdomen can also trigger pancreatitis. And then you have drug-induced pancreatitis. There are certain drugs which can cause pancreatitis, chemotherapy drugs, a lot of drugs actually. So these are the common causes of pancreatitis. Okay. And with are there any treatment modalities like when a person comes to you with pancreatitis? What are the various treatment modalities which we start the patient on, the medications, or later on if he requires surgery? So if you ask for a specific treatment, there is no specific treatment for pancreatitis. First, you have the major thing which we are worried about is organ failures. Because pancreatitis जिससे हम बात करते हैं pancreas में उस तरह के एंजाइम्स या चीजें होती है जो हम लोग लक्कड़ पत्थर खा जाते हैं वो हजम करने के लिए पैंक्रियास के एंजाइम्स यूज होते हैं तो जब वो पैंक्रियाटाइटिस होता है तो वो खून में चले जाते हैं और फिर वो अपनी ऑर्गन्स को अंदर से खाना शुरू कर देते हैं अब किस में कितना खाएंगे वो तो हर एक आदमी में अलग अलग रहता है तो अपने ऑर्गन्स को अगर वो खराब कर रहे हैं तो यू कैन हैव डिप इन ब्लड प्रेशर यू कैन हैव respiratory problems also. Your kidneys can fail. So you have to support these organs in the initial first 48 hours is very important when we talk. So first 48 hours mein, what single most important factor is the hydration because a lot of fluid, almost maybe more than 6 liters is lost in the acute attacks of pancreatitis. तो शुरू के 24 से 48 घंटे में फ्लूइड की जो मैनेजमेंट है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंटीबायोटिक्स आर नॉट रिक्वायर्ड इन द इनिशियल पार्ट मे बी आफ्टर 2 weeks if the attack is prolonged you may require them बट शुरू के हिस्से में बहुत जरूरी है पहले 48 घंटे में फ्लूइड से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं है आजकल ये पहले बहुत ज्यादा फ्लूइड देने की बात करते थे आजकल कुछ दरमियाने फ्लूइड की बात करते हैं 1 घंटे में 100 से 120 ml के आसपास फ्लूइड दिया जाता है आमतौर पर लोगों को जिससे कि उनकी हाइड्रेशन ठीक रहे किडनी पे असर न पड़े और जो प्रॉब्लम्स है उनको हम ठीक कर सके और साथ में फिर जब एक बार 48 घंटे हो जाए खत्म हो जाए आते थोड़ी चलने शुरू हो जाए कई बार आते बंद हो जाती है चलनी बावल साउंड जो होती है हमारी कम हो जाती हैं लोगों को हवा पास नहीं होती वो थोड़ी चलने शुरू हो जाए दर्द कम हो जाए सो पेन की मैनेजमेंट करना और फ्लूइड देना दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग द फर्स्ट 48 आवर्स आफ्टर 48 आवर्स यू शुड ट्राई फॉर अर्ली रीफीडिंग यानी कि उनको आपने खाना बंद किया था शुरू में वो आप उसको देना शुरू करें बिकॉज अदरवाइज अगर
अगर आप उनको बहुत लंबे समय तक खाना नहीं देंगे तो आपकी आंतों के जितने कीटाणु होते हैं, हमारी आंतों में लाखों करोड़ों कीटाणु होते हैं, वो वहां से ट्रांसलोकेट होकर पैंक्रियाज में जाते हैं इन्फ्लेमेशन और वहां इन्फेक्शन कर सकते हैं। तो बाद में इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए बहुत जरूरी है कि एक बार उनका शुरू का हिस्सा निकल जाए, दर्द उनकी ठीक हो जाए, तो हम उनका खाना आस्ते आस्ते शुरू करें, जिससे कि बैक्टीरिया जो है वो हमारी आंतों के अंदर ही रहे और बाहर जाके पैंक्रियाज में इन्फेक्शन ना करे। So that is one of the important points. Ki early refeeding is also very important where Yeah, treatment so whenever you can, so if somebody cannot be fed by mouth, उल्टी आ रही है तो एक लंबी ट्यूब होती है जो कि NJFT जिसको बोलते हैं, नेजोजेजुनल फीडिंग बोलते हैं, तो उसके थ्रू भी फीडिंग करनी जरूरी पड़ जाती है कुछ पेशेंट्स में। सो फीडिंग इज इम्पोर्टेंट आफ्टर द इनिशियल स्टॉर्म हैज वेदर्ड, लाइक आफ्टर 48 hours probably, maybe 72 hours. And does this recur again, pancreatitis, अगर आपने उसको पहले ट्रीट कर दिया है और कुछ टाइम के बाद ये वापस रेकर होता है, इसके रेकरेंस के कितने चांसेस होते हैं? वो अलग अलग चीजों में अलग अलग होता है। जैसे अगर आप शराब का सेवन लगातार करते रहते हैं तो पैंक्रियाटिस हो सकता है। अगर आपका गॉल ब्लैडर के स्टोन की वजह से हुआ है और आप गॉल ब्लैडर नहीं निकालते या बाइल डक्ट में जो स्टोन है उसको साफ नहीं करते, तब भी हो सकता है। हेरिडिटरी पैंक्रियाटिस में हमारे पास कोई दवाई नहीं है जिसको हम रोक सके, उसमें अटैक बार बार होने ही है। और कई बार कुछ एनाटॉमिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे पैंक्रियास डिविजन है, उसके साथ एसोसिएट होता है पैंक्रियाटाइटिस। तो उसके लिए भी अगर हम कोई एंडोथेरेपी, एंडोस्कोपिकली कुछ हम चीजें करते हैं, ट्रीटमेंट मोडालिटीज होती हैं, अगर उसको ट्रीट नहीं करते तो ये अटैक्स बार बार हो सकते हैं। और कौन सा अटैक सीवियर होगा, इतना सीवियर कि आप आईसीयू पहुंच जाए या जान के लाले पड़ जाए, वो कहना बहुत मुश्किल होता है। शुरू में हम कई बार नहीं बता सकते कि ये पैंक्रियाटिस कितना सीवियर है। कई बार तो इतना सीवियर होता है कि पेशेंट डजंट इवन सर्वाइव 24 hours, but sometimes the treatment, sometimes the disease evolves. So जो इन्फेक्शन इसमें होती है, अगर कुछ दो तरह का पैंक्रियाटिस होता है, एक तो सिर्फ पैंक्रियास में सूजन हुई और एक पैंक्रियास का कुछ हिस्सा डेड हो गया। जब पैंक्रियास का कुछ हिस्सा डेड हो जाता है तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं आफ्टर 2 weeks. So that is important. And then the management happens, the real management usually is required after 2 weeks. तो जो हिस्सा डेड है उसमें अगर इन्फेक्शन हो जाती है तो उसके लिए कुछ एंडोस्कोपिक थेरेपी, कई बार सर्जिकल थेरेपी, कई बार ऊपर से स्किन से ही ड्रेन्स डाल के वो चीजें करनी पड़ती है। So basically the cause needs to be treated first. That's what you meant. And secondly, we have to look for if there is any complication, then we treat that. So that is how. हाँ, पहले तो आपको पैंक्रियाटाइटिस को पेशेंट को स्टेबल करना है, उसको पेन को और फ्लूइड को मैनेज करना है और उसको खाना शुरू करना है। और अगर कहीं पीलिया ज्यादा हो रहा है या कोलेंजाइटिस एक होता है जिसमें बाइल डक्ट इन्फेक्शन होती है, तो ERCP प्रोसीजर से बाइल डक्ट को साफ करना जरूरी रहता है। उसके बाद जब आप पेशेंट को स्टेबल एक बार कर लेते हैं और आपको कॉज पता लग जाता है, तो अगर वो ट्रीटेबल कॉज है, हेरिडिटरी पैंक्रियाटिस में वो ट्रीटेबल नहीं होता, अगर ट्रीटेबल कॉज है तो उसको ट्रीट करना है जब भी आपको समय मिलता है बीमारी की सीवियरिटी के हिसाब से। और अगर सीवियर पैंक्रियाटाइटिस है उसमें आप शायद शुरू में कुछ भी नहीं कर पाते, तो फिर आपको काफी लंबे समय तक वेट करनी पड़ती है। और कॉम्प्लिकेशंस अगर होती हैं सीवियर पैंक्रियाटाइटिस में, पेशेंट्स हैव स्टेड almost months together in hospitals with complications of pancreatitis. So it can be very mild disease and it can be so severe that you have not, आपको बहुत लंबे समय तक हॉस्पिटल में ठहरना पड़ सकता है और आपको बहुत सारे ऑपरेशंस या प्रोसीजर्स कराने पड़ सकते हैं। So there is no limit, no time limit, defined time limit नहीं है इसका कि इतने दिन में ये ठीक हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। ओके, वो 2 से 3 दिन के बाद हमको थोड़ा आइडिया लग जाता है, बट कौन कैसा बिहेव करेगा उसको शुरू में बताना, इन द फर्स्ट 2-3 days you can have some idea, but actually what will happen to one particular person, it only time will tell. So there is no time limit to when the person will be totally free of the disease. And sometimes they are never totally free out of the disease. तो एक बार acute pancreatitis का अटैक हुआ, उसके बाद कई लोगों में chronic pancreatitis भी हो जाता है। So they keep on having these attacks of acute pancreatitis या chronic pancreatitis का पेन, और फिर और प्रॉब्लम्स ही होती है। तो शुरू में इस चीज के बारे में बोलना बहुत मुश्किल है। So Dr. Shandil, during the treatment of acute pancreatitis, usually we do certain tests like amylase, lipase, ये करते हैं. How frequently these tests need to be repeated?
सो अमाइलेज लाइपेस का एक थोड़ा मिसयूज ही मैं कहूँगा, क्योंकि अमाइलेज लाइपेस का फायदा सिर्फ उतने में है कि वो जब वो नॉर्मल से 3 गुना बढ़ जाते हैं तो हम उसको पैंक्रेatitis लेबल कर देते हैं, उसका फायदा उतने में ही। एक बार अमाइलेज लाइपेस अगर आपके बड़े हुए आ गए, आपको पैंक्रेatitis आप मैनेज कर रहे हैं, बस उतना ही उसकी जरूरत है। अब उसको 2-3 दिन बाद रिपीट करें कि उससे कम हो रहे हैं तो उससे कोई फायदा, उसको कोई फायदा नहीं। उसका फायदा तभी होता है कि पेशेंट ठीक हो गया है तो, या उसके कोई सिस्ट बनी है तो वो हमारे पे लगातार बढ़े रह सकते हैं, और या पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया था, उसके 3-4 हफ्ते के बाद पॉज आप ट्रीट नहीं कर पाए या कुछ भी हुआ, उसको दोबारा पेन हुआ, फिर आप हमारे कराएं, फिर वो बड़ा हुआ आता है तो आप बोलेंगे दोबारा अटैक हुआ है। सेम अटैक में अगर पेशेंट ठीक रहता है तो दोबारा उसको रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं। Okay. I just wanted to ask you, are there any new emerging modalities of treatment for pancreatitis? कुछ नए developments हुए हैं या कुछ नया treatment has come in? अनफॉर्चुनेटली नॉट। हम जो स्टडीज हुई हैं बस वो यही बताती हैं कि आपको शुरू के 48 आवर्स में फ्लूइड कितना देना है। पहले बात करते थे बहुत ज्यादा देना है, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर बहुत ज्यादा देना है, फिर अब थोड़ा सा एक मॉडरेट फ्लूइड प्रोटोकॉल पे आ गए लोग के बहुत ज्यादा। पिछले साल ही एक स्टडी आई थी तो उसने कहा कि नहीं, बहुत ज्यादा जो आप 150-200 ml हर एक घंटे में अंदर डालते हैं उससे साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं, तो मीडियम अमाउंट ऑफ फ्लूइड देना होता है, लगभग 1.5 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से शुरू में हम शुरू करते हैं। So that is the only thing that has to be given in the first 48 hours। और जो इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं वो इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं जो पैंक्रेatitis की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे सिस्ट हो गई, उसमें वो हो गई, तो एंडोस्कोपिक मैनेजमेंट उसमें बेटर हो गया है, परक्यूटेनियस मैनेजमेंट बेटर हो गया है, हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो गई है। तो कितना फ्लूइड देना है, कब खाना शुरू करना है, और बाद में उसको एंडोस्कोपिकली मैनेज करना है, सर्जिकली मैनेज करना है, या कुछ नहीं करना है, उनकी समझ हमें आ गई है। पर अगर आप ये बोलें कुछ दवाइयां आ गई जिससे पैंक्रेatitis ठीक होता है या पैंक्रेatitis डेवलप नहीं होता, तो अनफॉर्चुनेटली उसका आंसर इज अ बिग नो। And how does this alter the lifestyle of the patient or the quality of life of the patient if he has acute pancreatitis? जो नेचुरल हिस्ट्री रहती है एक्यूट पैंक्रेatitis की, अगर उसको माइल्ड अटैक होता है और माइल्ड अटैक के बाद जो कारण था आपने उसको फिक्स कर दिया, गॉल स्टोन्स निकाल दिए, गॉल ब्लैडर निकाल दिया, उसने शराब छोड़ दी, तो हो सकता है कि दोबारा अटैक बिल्कुल भी ना हो और नॉर्मल आदमी की तरह जिए। पर उसको अगर सीवियर पैंक्रेatitis हुआ है और फिर वो कितने दिन हॉस्पिटल में रहा है, उसके बाद भी अगर आप किसी भी तरह से सर्जिकली, एंडोस्कोपिकली, किसी भी तरह से उस पेशेंट को के ऑर्गन फेलियर्स को या जो उसको अंदर मलबा बना है उसको साफ कर देते हैं, then also that patient can remain as a normal human being after all these things have been taken care of, whatever time it takes. But some people can develop diabetes, some people can develop chronic pancreatitis। chronic pancreatitis तो उसमें लगातार पेन बार बार चली रहती है, डायबिटीज भी डेवलप हो जाती है, कई लोगों को लगातार दस्त लगे रहते हैं। सो ये डिपेंड करता है कि आपकी सिवियरिटी कितनी रही है पैंक्रेatitis की और आपके पैंक्रियाज में रेजिडुअल डैमेज कितना है। और कुछ लोगों को, बहुत सिलेक्ट फ्यू लोगों को अगर क्रोनिक पैंक्रेटिस डेवलप होता है तो इवन पैंक्रेटिक कैंसर कैन आल्सो डेवलप ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो दीज आर द थिंग्स। सो इन अ गिवन केस यू कैन नॉट से कि उसकी लाइफस्टाइल कैसी रहेगी। He can stay absolutely normal even after 4-5 days and never have any problem in his life if everything is fixed। अगर वायरस की वजह से हुआ है, वायरस चला गया, माइल्ड अटैक था, सब कुछ ठीक रहेगा, वो ठीक ही रहेगा जिंदगी भर। और उसको अगर बहुत कॉम्प्लिकेशन हुई है, बहुत प्रोसीजर्स करने पड़ गए हैं, बहुत लंबे हॉस्पिटल में समय रहा है, तो फिर उसकी जो रेस्ट ऑफ द लाइफ कैन ऑलवेज बी, यू कैन से दैट वो डॉक्टर्स के चक्कर लगाता रहेगा, अस्पताल के चक्कर लगाता रहेगा। इट्स सच अ वेरिड डिजीज, सच अ वेरिड मैनिफेस्टेशंस। और इस तरह का रहता है कि शुरू में अटैक में आप बता ही नहीं सकते कि ये जो एक पर्टिकुलर पर्सन है ये आगे कैसा बिहेव करेगा। And if a person who is an alcoholic and he has this acute pancreatitis, he gets treated and he goes back to his previous habits of drinking alcohol. So, what are the outcomes after that? Like, obviously, it will worsen the disease, right? So they say कि
जो अल्कोहलिक में एक्यूट पैंक्रियाटिस होता है उनको शायद क्रॉनिक पैंक्रियाटिस ऑलरेडी होता है, पैंक्रियास उनका बैकग्राउंड डैमेज ही होता है, उसके ऊपर उनको एक्यूट अटैक होता है आधे लोगों में एटलीस्ट। और जिन लोगों में नहीं होता है एक्यूट पैंक्रियाटिस हुआ तो उसमें हाई चांसेस कि उनको दोबारा से पैंक्रियाटिस होगा, और अगर एक्यूट नहीं भी होता तो क्रॉनिक पैंक्रियाटिस उनको डेवलप हो जाएगा। And those patients who have diabetes or hypertension or any other comorbidities, does having acute pancreatitis worsen the prognosis? It all depends on how severe is the pancreatitis. Hypertension probably doesn't have any say in this disease. Diabetes, yes. If you already have diabetes, the diabetes can worsen because pancreas damage tail में जो इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, अगर वहाँ पे भी डैमेज रहा है तो न्यू ऑनसेट डायबिटीज भी होती है, और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डायबिटीज कैन आल्सो वर्सन आफ्टर पैंक्रेटाइटिस। एंड जिन लोगों को और बीमारियां होती है जैसे किडनी फेलियर इटसेल्फ, people who are on dialysis they are more predisposed to development of pancreatitis. So उनमें जब pancreatitis होता है तो उनको मैनेज करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि ज्यादा फ्लूइड नहीं दिया जा सकता। हार्ट पेशेंट्स को मैनेज करना मुश्किल होता है, तो उसमें प्रोग्नोसिस इन दैट डिजीज इन दैट illness also during that admission is also bad, so they don't fare well, so their prognosis कि वो ठीक होंगे, बचेंगे, कैसे रहेंगे, that is bad. And I believe, I guess that is true for every disease कि अगर आपको 4-5 बीमारियां और भी हैं साथ में तो आपकी किसी और बीमारी, कोई नई बीमारी आ गई तो आपका जो आउटकम होगा वो खराब ही होगा। Yeah, very true, very true. Coming to our last question, Dr. Shandil, what advice do you have for individuals with acute pancreatitis in terms of self-care and managing their symptoms? What would make their disease treatment process easier one, and how they can take care of themselves once they go back home? So once they go back home, one thing that we tell each and everyone, if most of the times if we haven't done their gallbladder removal, so that is to be done sooner, if not in the same admission. Ideally it should be done in the same admission, but if there are some complications, those have to be dealt, then we combine the two things together. Those complications has to be tackled and gallbladder has to be removed in the same setting later on. Alcohol, no alcohol later on. And in the initial phase, probably you should have a low-fat diet, so there is lower burden on the pancreas for digestion of the fat, and take regular meals and have a normal, healthy lifestyle. That's about all. And if there is a loss of significant pancreatic tissue and there is some concern that pancreatic parenchyma या pancreas में जो रिजर्व है वो कम हो गया है, तो कई बार उस तरह की दवाइयां भी दी जाती हैं जो पैंक्रियास को मदद करती हैं, मतलब हमारी डाइजेशन के लिए, पर वो बहुत कम परसेंटेज लोगों में दी जाती है। एक्यूट पैंक्रियाटिस के बाद बहुत कम, it's a regular routine that some people do give those medicines, but they are not required. So you should have probably a low-fat diet for a certain period of time, and the cause, if it is a treatable cause, that needs to be treated. If it's not treated in the same setting, same admission, sooner it should be treated, and you should avoid alcohol at any cost. And sometimes, yes, another cause is high triglycerides. Or sometimes after an ERCP procedure, also pancreatitis can happen. So after ERCP pancreatitis, the protocol management is the same. But if it is because of triglycerides, the treatment modalities are slightly different, and you have to reduce your triglyceride by medicine, by weight loss, and by your dietary changes. Okay. And any don'ts specifically for patients of pancreatitis? Not specifically. What we have talked about, what the things that we talked about, most of the things I think we have talked about. So have a normal, healthy lifestyle. Listen to your doctor's advice. Get your procedure done on time. Yes, get your procedure on time. Don't take alcohol. Maintain a healthy lifestyle. Take healthy diet, which should be balanced. And yes, maintain healthy weight also. And if you have had acute pancreatitis or chronic pancreatitis, is a possibility. A lot of pancreas has already been lost because of that attack.
then you need certain tests to be repeated periodically according to your doctor's advice. Those should not be dispensed with. They should be done. उनको कराना ना चाहिए समय के हिसाब से जब भी जरूरत हो. So, dear friends, maintain a healthy lifestyle, follow your doctor's orders, eat right, exercise, and stay healthy. Thank you, Dr. Shandil, for joining us for this conversation and really uplifting us with this encouraging message. Thank you once again. To all our listeners and viewers, if you need any professional help, you can reach out to us through details mentioned below or through our social media handles. To know more about healthcare and our upcoming episodes, do follow, subscribe, and share this message to your families, friends, and your loved ones. We'll be back again with another specialist discussing another interesting topic next week. For any suggestions regarding this topic which was discussed today, kindly DM us on our social handle at Apollo Hospitals Delhi. We'll be happy to connect with you. Till then, stay happy and stay healthy.